Are you able to see this chapter? That is classical relation and fuzzy relation. Yeah. Okay. So what we are going to study in this chapter introduce the notation of relation. Okay, as basic idea behind numerous operations such as what kind of operation that we going to perform, Cartesian product, composite relation, equivalence properties. Like set relation, a fundamental important like set like set a relation is fundamental importance in all engineering, science, and mathematical based field. Okay, it also associated with graph theory, subject of wide impact design and data manipulation. Relation can also be represent similarity, a notation important to many different technology and expressed in numerous metaphorical quotes. Above concept of key. See, the basic idea of this relation is set theory is also important and relation is also important in all the engineering, science and mathematical field. But how it's important, let's see one by one. All of you with me or not? समझ में आया क्यों करना है relation? First, why relation? If two fuzzy set are given to you, then what kind of operation, what kind of relation apply between this two fuzzy set, and then you will get some answer. Got it? So let's understand the fuzzy relation and crisp relation one by one. All of you with me or not, please reply. Relation क्या होता है उतना पता चला? Yes or no? नहीं पता चला. Okay. Take some real world example. Suppose temperature and pressure is given to you. No, take some electrical circuit example. If voltage is this, resistance is this, then what kind of current you going to apply? There is one example. Other example, if one fuzzy set is giving you the temperature, second fuzzy set giving you pressure, what kind of relation that you will apply on temperature and pressure? Then you will find that this is the heat that you are going to produce. So for finding a relation, one of the way to do the fuzzy relation is Cartesian product. Ekta, when you see this, you will understand. Other people example समझ में आया? What is fuzzy relation? Take some simple example. I'm taking some simple examples. Before going to the fuzzy relation, let's understand what is crisp relation. बाकी सब कहाँ पे है? मोहित, राहुल, दीप्ति, जिनेंद्र, तनिष, अदित, जॉय, तन्मय. आशुतोष, यश, reply. Reply दो. Kindly reply. If you don't know, tell me. I will explain you again. Okay. Let's consider with some example. Crisp relation. How we define a crisp relation? Suppose we have two crisp set x and y. Okay. So crisp set में क्या होता है? कैसे कौन सी वैल्यू होती है that you already know? Crisp set में either having 0 and 1. Okay. So suppose they are giving you find a crisp relation between two crisp set x and y. So what you will do? First set cross Cartesian product y. So what will you get? X and y, which are element, that is x is belongs to the universal set x and y is belongs to the universal set y. Okay. So the relation between,
तो वहां पे फजी सेट में हमने आगे भी देखा था, फजी सेट में रिलेशन मेंबरशिप फंक्शन कुछ भी दिखाने के लिए हम क्या यूज करते थे, म्यू। यहाँ पे क्रिस्प सेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, काई। काई x क्रॉस y xy is equal to either 1 or 0. Okay, so crisp set contain only two value, 1 and 0. Suppose consider the first one is a second one is b. So only two possibility, that a and b are brother. Okay, all of you please understand, a and b are two element with me. Okay, a and b are in relation like a brother. So if they both are brother to each other, then what I will say, I will give the value 1 and I will say it is full or exact relation. Okay, or in crisp set what are the other possibility, they are not brother. So these are the other possibility, so I will directly say 0. So I will say no relation. So only two possibility in crisp set. ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, इतना समझ में आया। ए और बी दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट। क्रिस्प सेट क्या बता रहा है कि भाई क्रिस्प सेट में दो ही रिलेशन होते हैं, आइदर दे आर ब्रदर, आइदर दे आर नॉट ब्रदर। ओके, इतना समझ में आया। अदर प्लीज रिप्लाई। विकास, महेंद्र, अनिमेश। ओके, so is it practically possible that what if a and b are cousin brother? What if a and b are cousin brother? क्रिस्प सेट तो भाई दो ही बोल रहा है तो मैडम ये तो आइदर ब्रदर होगा या तो फिर ब्रदर नहीं होगा। व्हाट इफ दे आर कजिन ब्रदर? कजिन ब्रदर है तो इज देयर एनी वे टू रिप्रेजेंट दिस बोथ ए एंड बी इनटू द क्रिस्प रिलेशन? नो वे। इतना समझ में आया क्या है, क्यों क्रिस्प रिलेशन से फजी रिलेशन पे क्यों गए, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया दैट crisp relation is not capable to find the intermediate relation between two elements. वो cousin brother वाला नहीं समझता, वो यही समझता है भाई either yes, either they are brother or either they are not brother. Just like that digital circuit में यही होगा, अगर 1 और 0 है तो अगर एंड अप्लाई करना है तो 1 into 1 and 0 they I will give 1 और 0 into 0 I will give 0. This how the crisp relation will work. इतना समझ में आया? गॉट इट और नॉट? यस और नो बता दो। एकता, यशवी, प्रियांशी, ध्रुव, हिमांशु, वामसी। ओके, so this is not a practically possible approach because this x cross y is give you only two answers, 0, 1. Okay, so let's consider the example. Let's consider the next example, the temperature and pressure. Okay, so so how will I define this two? Suppose I have a one set, example देखते हैं। I have a one set which having temperature, another set which having pressure. X is represent temperature and y is represent pressure. So what are the element in X? A, B, C are the element in X. Y 1, 2, 3 is element in pressure Y. इतना समझ में आया? X के element A, B, C, Y के element 1, 2, 3. So here, if a temperature is A, then what kind of pressure is possible? 1, 2, 3. So they are connected with each other. B, a temperature is B, then what kind of pressure can be possible? 1, 2, 3. And C, what kind of pressure can be possible? 1, 2, 3. So these all are connected. This how the graph is created. मैंने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है? इतना समझ में आया मैंने क्या किया? टेम्परेचर एंड प्रेशर है, x is one element, sorry, x is represent temperature, y is represent pressure. x के element है ABC, y के element है 1, 2, 3 and these all are connected with each other. Okay, suppose they told you to find the relation matrix for crisp set R. अगर बोले कि relation matrix बनाओ तो कैसे बनाओगे? तो simply all of you please write down, क्या करोगे? You simply write R equal to in x coordinate, that A, B, C and y 1, 2, 3.
इतना समझ में आया मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैट्रिक्स बनाओगे दैट ABC 1 2 3. ऑल ऑफ यू रिप्लाई. इतना समझ में आ रहा है? लिखो प्लीज. Okay, so here see A and 1 are connected with each other, means there is some relation between A and 1. So what if they are connected with each other? So I will just simply write 1 for crisp set. Okay, if 1 A and 2 are connected with each other, so I will simply write A and 2 1. If A and 3 is connected, then I simply write A and 3 1. Every value in matrix is 1. Okay, suppose मैंने यहाँ पे एक लाइन एक कनेक्शन निकाल दिया A3, ये A3 वाला कनेक्शन और ये C2 वाला कनेक्शन निकाल दिया. Then what will be the value of matrix? A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? If I disconnect A3 and C2, then what will be the value of matrix? So A3 equal to 0 and C2 equal to 0. So this how, if two crisp relation is given to you and the graph or something relation is given between two sets, then how will you make a relation matrix? So this how you will make a relation matrix. So mapping of x comma x cross y is 2 0 comma 1. Here we talk about a crisp relation. Fine. Now let's see what is fuzzy relation. क्रिस्प में और फजी में सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, मुझे ये बता दो. क्रिस्प और फजी में क्या डिफरेंस होगा? 4-5 लेक्चर से यही कर रहे, क्रिस्प फजी. तो क्रिस्प और फजी में डिफरेंस क्या होगा, इतना बता दो. समझ में आ रहा है? समझ पड़े छे? रेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन 0 और 1. बाकी सब क्या सो रहे हैं क्या? मोहित, राहुल, आदित्य, हर बार लेट नहीं आ सकता तू. मैम वो नहीं मिल रहा था. क्या नहीं मिल रहा था? लिंक का एक्सेस नहीं हो रहा था. पॉसिबल ही नहीं है. सी so I got it. Range value between 0, 1. So यहाँ पे क्या था? Interval in curly braces only 0 and 1. यहाँ पे open interval between 0 to 1. So how will I write a relation R, fuzzy relation R, having two sets, fuzzy set X cross fuzzy set Y, where X and Y are two membership function value. X and Y are two elements and having a membership function value XY, where X and Y is belongs to X cross Y. This is a way to represent a fuzzy relation. लिख रहे हो? प्लीज लिखो. लिख लिया? तो वहां पे हमने रिलेशन बताने x क्रॉस y करने के लिए क्या किया? अ सिंपल मैट्रिक्स रिलेशन बता दिया. फजी रिलेशन में ऐसे नहीं होगा. फजी रिलेशन में डिफरेंट वे से होता है. तो म्यू r bar xy is the strength of relation which is membership function. You already know. समझा? Are you writing? ऋषभ, मोहित, दीप्ति, जिनेंद्र, तनिष, आदित्य, जॉय, दर्शिल, आशुतोष, यश, लालचंदानी, सिद्धार्थ, माहिती, हिमानी, रुणाल, सत्यम, धैर्य, संजीव, अनिमेश, प्रियांशी, समझ में आ रहा है? राइटिंग तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Okay, let's see one example, then you will get more clear. Suppose I have
four element, that is A, B, C, D. So the relation between this four element is, suppose A is having a line that goes between A to B. Suppose A is a father and B is a son. So A to B one relation, then B is the father, C is the son. तो C और A में क्या relation होगा? That C is A is the grandfather of C or something. So this is how the graph is connected. ये कोई graph connected है, ठीक है? Make this graph A, B, C, D. श्रव्या, अजिता, अपूर्व, फाइन, बना लिया? ओके, so how will I write a relation in CRISP? तो relation of A, B. अगर मुझे रिलेशन मैट्रिक्स बनाने को बोला तो मैं क्रिस्प में क्या करूंगी? जो जो कनेक्टेड लाइन है या A से B जा रही है, ठीक है, A to B is connected. So what I will simply give, I will just simply write 1 over here. B to C, I will just simply write B to C are connected. Yes or no? Give me the answer. So B to C, what will be the answer? 1. C to A. C to A, is this any connection between C to A? Yes. So I will just simply give 1. And C to D, I will give 1. So how will I write a relation? So relation of A comma B, because A and B are connected, A to B are connected, not B to A. See the line direction कहाँ पे जा रहा है? A to B. So A comma B, they are connected. So I will write 1. Then B to C. So B comma C is equal to 1. C to D. Sorry, C to A. So C comma A is equal to 1. And C to D. C to D, that C comma D is equal to 1. Now can you tell me, if I write A comma C, then what will be the answer? If I write a relation of A comma C, then what will be the answer? 0, 5. Okay, तो आप relation matrix बना सकते हो इसका. Can you make a relation matrix for this graph? Relation matrix बनेगा? Can you make a relation matrix for this crisp set? Fine. ये समझा? Okay. Now ये तो हो गई crisp की बात. Now let's talk about some fuzzy thing. Same graph. Okay. But A and suppose what kind of relation it is? Suppose A, B, C, D all are friends. तो इसमें क्या बता रहा है? पता है? A और B they are friends, but 1.0% से 1.0% ही उसका फ्रेंडशिप है. इतना समझ में आया all of you? You have 1, 2, 3, 4 friends, ठीक है? तो भी इसमें क्या हो रहा है? That A and B friend तो है, but उतनी फ्रेंडशिप नहीं है, सिर्फ 1.0 की है. B और C फ्रेंड तो है, but हाफ फ्रेंड 0.5. नहीं, A और B are best friend. Got it? Because it is having 1. All of you got it? क्या बता रही हूँ? A, B, C, D 4 फ्रेंड है, ठीक है? यहाँ पे क्या बता रहा है? A, B, C, D जो है, they all are best friend. Is it possible in real life? सारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं या फिर एक ही होता है? एक दो होते हैं? समझ में आया क्या बता रही हूँ? In crisp relation, what they say, either they are friend, best friend, or they are no friend. ऐसा पॉसिबल है? नहीं है. तो यहाँ पे क्या बता रहा है? A, B, C, D are friend. So A and B are best friend. B and C are friend, but not that much. Friend मतलब half friend. C and D are friend, but only 0.2%. सिर्फ हाई हेलो की दोस्ती. और C और D are friend, that's 0.8%. Friend, but not that much best friend. इतना समझ में आया? तो फजी रिलेशन क्या है? समझा? समझा? बाउंस गया मैम? ओ, इफ A to B is 1, then B to नहीं, just see the relation. वन साइडेड भी होता है ना.
ए के लिए बी बेस्ट फ्रेंड है, बी के लिए है कि नहीं वो थोड़ी दिया रखा है। सी द लाइन, ग्राफ कहाँ जा रहा है वो देखो, देन जस्ट लुक एट योर आंसर एंड सी द ग्राफ। अदर समझ में आया क्या हो रहा है? सी द ग्राफ एंड मेक अ रिलेशन मैट्रिक्स बनाओ फॉर क्रिस्प ऑल्सो एंड फजी ऑल्सो। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई। सुनील, भावेश, सौरव, यशवी, आशीष, देवांश, जीत, एकता, तुषार, वत्सल, गौतम, मनीष, वामसी, ध्रुव, प्रियांशी, धैर्य, जॉय। समझ पड़े जो ना? समझ में आ रहा है ना ऑल ऑफ यू? ओके, सो रिलेशन मैट्रिक्स बनाया, हाँ कि ना बोलो? अदर रिलेशन मैट्रिक्स बनाया, ये रिलेशन तो मैंने डिफाइन कर दिया। तो रिलेशन मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए? एक साइड पे x, दूसरी साइड पे सॉरी एक साइड पे ABCD, दूसरी साइड पे भी ABCD। इज A और A connected with each other? No, then 0. A and B is connected with each other, then 1. A and C is connected, 0. Fine, fine. ये मैट्रिक्स बना सबका? प्लीज रिप्लाई, रिप्लाई दे दो भाई। समझ पड़े छे? आदित्य, फाइन। आगे बढ़ू? ये हो गया, लिख लिया सबने? डन? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैम और डी, अरे मेरे से गलती हो गई इसीलिए तो मैंने यहाँ पे येलो किया था, 0 आएगा, राइट? ओके, फाइन। अभी बहुत हो गई इस रिलेशन। लेट्स टॉक अबाउट सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे ये रिलेशन कैसे वर्क होता है, लेट्स सी। ऑल ऑफ यू विथ मी और नॉट? प्लीज रिप्लाई। फाइन, ओके। तो टेक द एग्जांपल, बुक में दे रखा है टीजे रो 3.5. okay, so what the example is saying, suppose we have two fuzzy set A that define a universal of three discrete temperature. A is defined what? A temperature which having three elements x, x1, x2 and x3. Okay, suppose we have a two fuzzy set. A is defined a universal of three discrete temperature, x is equal to x1, x2, x3, and B is defined a universal of two discrete pressure, y is equal to y1 to y2. Okay, तो क्या दे रखा है इसमें? One temperature is given and another is pressure. Temperature and pressure is given. ठीक है, so and we want to find a fuzzy Cartesian product between them. A fuzzy set A could represent a ambient temperature. Okay, some temperature, and a fuzzy set B is giving a near optimum pressure, temperature and pressure. Fine. So for Cartesian heat exchanger, for certain heat exchanger, the Cartesian product might represent the condition that temperature and pressure pair for exchange the associate efficient operation.
समझा? ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इस सिस्टम दे रखा है, उसमें दो फजी सेट है, एक फजी सेट दे रखा है x that represent the temperature, the other fuzzy set is giving a two pressure, दो वैल्यू दे रखी है प्रेशर की. ओके, so a could represent a temperature, ambient temperature, and b could represent a near optimum pressure to certain heat exchange. Okay, so what can be the Cartesian product relation between the temperature and pressure there? So we can give the operation efficient operation to the machine. Okay, तो ये दोनों में ऐसा क्या हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाए, ऐसा क्या नियर ऑप्टिमम सॉल्यूशन लाए, तो वी कैन एक्सचेंज a particular amount, efficient amount of heat into the machine. इतना समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चल रहा है? तो अगर ये चीज दे रखी है तो व्हाट क्या हम अप्लाई करें जिससे एफिशिएंट ऑपरेशन परफॉर्म हो? ऑल ऑफ यू विथ मी और नॉट? ये दिख तो रहा है ना? गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझा? हाँ के ना बोल दो. बाकी सब राहुल, मोहित, दीप्ति, यशवी, फाइन. So let's see what kind of ये fuzzy set में क्या है. So fuzzy set A which having element x and this represent what? 0.2 is represent what? What is the 0.2? Membership function. Plus is indicate what? Plus is indicate what? A union or addition. Union or addition. Plus means what? Union. Then element x2 having 0.5 plus element x3 having membership function value 1. Then b is the pressure y1 where membership function value 0.3 plus y2 the membership function value 0.9. So a is represent a column that size is 3 cross 1. एक वेक्टर होगा that is 3 cross 1 and abhi represent a row vector which having a is represent what vector? Column vector. Fine. And b is represent what? Row vector 1 cross b. Then fuzzy Cartesian product of using कितना होगा? 3 cross 1, 1 cross 2, 1 1 गया तो 3 cross 2 का एक जो हमने a और b लिखा है that is the distance of fuzzy set from center. A and b are actually the fuzzy set. Read this. A could represent a temperature and b could represent a pressure. It is a actual value of fuzzy set. तो कैसे दे रखा होगा? A equal to x, 0.2, x2, 0.5, x3, 0.1 ऐसे लिख रखा होगा एग्जाम में. अदर दिस वे. समझा? नहीं समझा तो लास्ट में पूछ लेना. ठीक है, अभी इतना समझ में आया? फाइन. Okay, so same thing I have written over here. So what they will say, the A is represent a column vector that is 3 cross 1 and B is represent a row vector that is 1 cross 2. यहाँ से 1 1 गया तो 3 cross 2 का एक पूरा मैट्रिक्स बनेगा. तो what how will we calculate this क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या करोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम ऐसे करते हो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में. रिप्लाई प्लीज रिप्लाई. अदर समझ? नाउ इट्स ओके. I'm sorry.
See, what you supposed to do to find a relation between two fuzzy sets? You supposed to take a first element 0.2, then second element 0.3, and minimum between two that you return as a first element. So minimum between 0.2, 0.3, 0.2. Are you getting? Please reply दे दो. बाकी सब कहाँ पे है? Please reply. Fine. So second element, that is 0.2, 0.9. What will be the minimum? 0.2. समझा? Then second row 0.5, 0. Second row, first column 0.5, 0.3. What is minimum? 0.3. Then second row, second column 0.5, 0.9. 0.5 is minimum. Third row, first column 1, 0.3. 0.3 is minimum. And third row, second column 1, 0.9. The answer is 0.9. So this is nothing but a relation matrix, the efficient relation matrix between heat and pressure. Got it? This is your final fuzzy relation answer. यहाँ पे हमको multiplication नहीं करना है, matrix multiplication. We supposed to find a minimum between these two and give the efficient heat exchange. समझा? तो ये बेसिकली क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से होगा. एक ग्राफ दिया होगा x1, x2, x3. x1 is equal to 0.1, 0.2, 0.5 and 1. And sorry, x1, x2, x3 उसका कुछ वैल्यू होगा 0.2, that 0.5 and 1. ये ग्राफ होगा. Then दूसरा एक फजी ग्राफ होगा, that is for y1 that is some y1, y2 और उसका कुछ रिलेशन होगा 3 and 9. Okay, so if temperature and pressure, if temperature is 0.2, this is your temperature. तो हम यहाँ पे कुछ 90 डिग्री टेम्परेचर होगा x एलिमेंट, मतलब y इज इक्वल टू सम प्रेशर, कुछ प्रेशर की वैल्यू होगी. ये दो का टेम्परेचर और प्रेशर है. तो व्हाट एक्शन यू गोइंग टू परफॉर्म? दिस इज द एक्शन दैट यू गोइंग टू परफॉर्म to put the value that available on 0.2. So put this graph. ऐसे efficient algorithm calculate होता है in fuzzy relation. इतना समझा? इतना समझा? लिख रहे हो? क्या कर रहे हो? प्लीज रिप्लाई. इतना समझा? मैं इतना बता रही हूँ that we have some graph which एक फजी सेट में हम ग्राफ बनाते थे which having a element that is having three temperature, that is x1, x2 and x3. तीन टेम्परेचर है. x1, x2, x3 नहीं होगा, वो उसकी कुछ रेंज होगी. सपोज 80 डिग्री, 90 डिग्री, 65 डिग्री, कुछ तो रेंज होगी. एकता x1, x2, x3 नहीं होगा. ठीक है, और उसका कुछ मेंबरशिप फंक्शन दे रखा होगा. समझा? कुछ तो वैल्यू और उसकी मेंबरशिप फंक्शन वैल्यू. ठीक है, तो अगर ये आए x और y, इफ टेम्परेचर इज 90 degree and pressure is 180 degree, then what operation that you going to perform? That heat exchange is between 0.2 means 90 degree की heat होनी चाहिए. ऐसा कुछ आंसर आएगा. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यही होगा. ये अभी बहुत दूसरा भी करवाना है. ये लिखा? और फिर डन. Okay, now next thing, projection.
first projection, second projection, and third projection. Total projection. So before going to this equation, let's see this by using some example. Okay. तो मेरे पास एक मैट्रिक्स रिलेशन है, फजी रिलेशन है ऑलरेडी, एक्स और वाई, ए और बी के बीच का जो रिलेशन बन के जो भी मैट्रिक्स बना है वो ऑलरेडी मैंने कुछ क्रिएट किया है. ऑल ऑफ यू विथ मी और नॉट, प्लीज रिप्लाई. Okay. So if someone say in your fuzzy relation find the first order projection, so what will you going to do? You will write mu a bar 1, that is nothing but a first order relation. First order relation. So first order relation is nothing but whatever the value of x is as it is and a maximum of y. x की वैल्यू है उसको कुछ नहीं करना है, ये जो y की वैल्यू है इतनी, ये जो y की वैल्यू है first row की maximum value that you supposed to put over here. All of you got it? What is first projection? Take a first row, whatever the maximum value, take it as a first projection value. Second row, again we have a maximum 1, so put it over here 1. Third row, we have a maximum value 1 over here, then put it over here, that is 1. So here this is the answer of your first projection. The first projection is contain a value in row, all the y element में जो भी maximum है वो आएगा. See, x as it is, comma maximum of y mu r bar xy, where xy is belongs to x cross y. समझा? Easy है. Then second projection में उसका उल्टा. Second projection में क्या करना है? ये वैल्यू रो की वैल्यू नहीं करनी है, कॉलम की वैल्यू, consider the column value. Then whatever the maximum, that put it as your second projection. That 0.4. Then second 0.8, यहाँ पे 1, यहाँ पे again 1, 1.8. So this is your first projection value and this is your second projection value. समझा? फर्स्ट प्रोजेक्शन सेकेंड प्रोजेक्शन में उसका रिवर्स, y as it is, then maximum of x mu r bar x comma y, that x comma y belongs to xy. समझा? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? हाँ कि ना बोल दो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, नाउ थर्ड इज टोटल प्रोजेक्शन. A total projection is nothing but a maximum value between a first projection and second projection. Maximum of x and maximum of y. यहाँ पे maximum क्या है? 1 आया. यहाँ पे maximum अगर कुछ और होता तो ठीक, मगर यहाँ पे maximum 1 है. यहाँ पे भी maximum क्या है? 1. So 1, 1, who is maximum? The total projection value is 1. समझा? So okay, if someone asks you find the first projection, second projection, and total projection in this relation matrix, then what will be your answer? What is first projection value? क्या होगा? रो वेक्टर क्या होगा? सॉरी, कॉलम वेक्टर क्या होगा? रिप्लाई 0.2, 0.5, 0.9. यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड प्रोजेक्शन क्या होगा? 0.3, 0.9. and total projection 0.9. Okay, now can you tell me why we need a first projection, second projection, and third projection kind of thing? Why we need first projection, second projection? I will tell you. So
The need of first projection, second projection and total projection is when I apply a temperature is equal to x. Suppose my temperature is 90 degree. X is equal to 90 degree consider करो. ठीक है. My x is 90 degree. Then what is the maximum pressure I apply? So the what is the maximum pressure? तो maximum pressure तो वो first order first projection में निकलेगा, that is 0.2. This is the maximum pressure membership function value that I applied when my pressure is x1, that is 90 degree. For x2 suppose 60 degree, then what will be the maximum pressure? 0.5. Then x3, then 0.9. So for finding this kind of value we need a first projection. Then second projection. Okay, if my pressure is this, then what will be the maximum temperature? What will be the maximum temperature? So it represents a maximum value 0.3. Then if my pressure is y2, then what will be the maximum temperature? Then it will give me the representation of 0.9 and the total projection. If I apply a maximum temperature and maximum pressure, then what will be my maximum membership function value? That is represented in total projection. इतना समझ में आया? Yes or no बता दो. समझा? ये लिख लिया? ये लिखा? Okay. P. Just like a normal fuzzy set and crisp set, a fuzzy relation also have a union, intersection and complement. But उसमें same ही होता है. By example, we will see from next time. ये सब बाकी है. Composite relation, mean max सब कुछ बाकी है. Got it? आज के अजीता नहीं समझ में आया? अजीता लिखा नहीं तो लिख लो फटाफट, मैं तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. ये बाकी है ना लिखना, ऑल ऑफ यू. Okay, I'm taking I am saying your roll number. Just mic on करके yes मैम बोल देना. Okay, और UI 17 CO 28 मोहित. एब्सेंट रखू प्रेजेंट रखू? मोहित एब्सेंट. UI 17 CO 29 राहुल. Present, ma'am. 42. 17 CO 42 दिखती. 42 दिखती. 45 present, ma'am. 42 42 present. 45 Present, ma'am. okay. Roll number 1 Present, ma'am. 2 Present, ma'am. 3 Present, ma'am. 4 Present, ma'am. 5 Yes, ma'am. 6 Yes, ma'am. 7 Yes, ma'am. roll number 9 नहीं है. Yes, ma'am. 9. What's your name? Okay, 9 last general. Okay, roll number 10 Yes, ma'am. 11 Present, ma'am. 12 Yes, ma'am. 13 Present, ma'am. 14 Present, ma'am. 15 Present, ma'am. 16 Present, ma'am. 17 roll number 17 18 Present, ma'am. Present.
Roll number 19. Present, ma'am. Roll number 20. 20 नहीं है. Okay, 21. Present, ma'am. 20 Mahendra. Yes, ma'am. 23, 24 नहीं है. 24, yes, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Yes, ma'am. 27 नहीं है. 28, 29, Present, ma'am. 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, 33 नहीं है. 32, present, ma'am. What's your name? Rishabh. 34, Present, ma'am. 35, Yes, ma'am. 36. Present, ma'am. क्लास में टाइम पे आया कर. Yes, ma'am. पक्का. 37. Vamsi. 38, Yes, ma'am. 40, Yes, ma'am. 42, 43, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 44, Yes, ma'am. 45, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 49, Yes, ma'am. 50, Yes, ma'am. 50. 52, Present, ma'am. 55, 53, Present, ma'am. then 55, Present, ma'am. 56, Present, ma'am. 57, Yes, ma'am. 58, 60. Present, ma'am. Okay. 61. Present, ma'am. Okay. Yes, Vamsi, you are present. Yes, Mohit present. Rahul Meera is also present. नहीं यार. Okay, fine. Okay. हो गया, लिख लिया?